हेलो एवरीवन। लगता है सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम आलोक वर्मा है और अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो 19 बैच का ऑफिसर हूँ और मैं अभी जॉब में कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने सीएसई 2022 से आईपीएस में सिलेक्शन लिया है। बट दिस सेशन आई वांट एवरीवन टू बी not monologues and engage themselves so we can quickly answers and the queries of the students and aspirants. So whosoever wants to ask something, please go ahead, type in the chat, or they can ask otherwise. So again, I will say that more I have the queries or the questions from your side, it will be better to answer them because the answers or the solution always comes from the problems. So my problems may not be the same as yours. So if you ओके, there's one query that मोटिवेशन कहाँ से आया तो अ, मेरा मोटिवेशन ये था कि जब भी मैं सिविल सर्विसेंट्स सिविल ऑफिस सर्वेंट ऑफिसर्स को देखता था तो आई फील मोटिवेटेड और स्पेशली जो कैपेसिटी जो अथॉरिटी उनके पास होती है टू डू पब्लिक वेलफेयर टू डू द सर्विस टू सोसाइटी इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी एंड द क्वेरी इज दैट पास्ट ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या सर? So with respect to this point, I would say that कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट इफ यू लुक फॉर द थीम्स ऑफ द क्वेश्चंस they are more or less same. Again, for the questions, let's take an example कि आप देखेंगे कि 17, 18, 19 के यूपीएससी के एग्जाम में you will find continuously flood related questions. Thereafter, there are some themes related to PPP model in economics. So the more closely we analyze the theme, the overall theme of the questions, the better for us. Questions themselves per se do not repeat, but themes repeats. CSAT की strategy क्या थी? So these questions asked by various aspirants. First of all, it depend upon the person to person because mine is math background. I belong to IIT Delhi mechanical branch, so I have a good background in mathematics. So students who have good background in mathematics generally do not face any problem in CSAT. But for other students who are from art background or humanities background, for them, there's a one thumb rule that I would like to say. Uh, Go for the English comprehensive question first. Attempt them as fast as possible with as good as accuracy you can. Second, you can move to mathematics question, but be it very choosy. First, you start from the first question, the mathematics. And if you read the question and you just feel that I can solve this question within 30 seconds or 40 seconds, let's say 1 minute, you solve it. And if you find that it will take little bit time, you know it or you do not know it. It doesn't matter. If it takes little bit time, leave it and move to next question. If you continuously keep doing this process, you will find that at the end of the paper, you might be able to solve 10 to 15 questions. Like they are very easy because some questions maybe depend upon the directions, some may be very easy in term of like taking LCM, SCM, or some maybe depend upon the relationship. So you may be able to solve 10 to 15 questions. So let's take that you are able to solve 90% accuracy English questions and 10 to 15 questions of the mathematics. That by this calculation, you will be able to easily cross the cutoff. So follow the strategy, and if you can do better, that is very good for you. But this is the bare minimum you can do. I think next question will be Ravindra Thombre. You can ask another question.
So until unless there's no queries or problems, I cannot answer them. I cannot tell you the solution because as it is said that necessity and the problems is mother of invention and mother of solution. So you must ask the queries or the your doubts so I can answer them. Dungeon Master, your question is that should be prepared for mains right now. The answer is where you are standing. Are you preparing for first time? Are you preparing for second time? Uh, so on. And regarding this question, I have made a detailed video on my Instagram channel. You can go through it. But for a quick reply in this chat live stream, I would say if this is the first time and you haven't uh, written any pre till now, the first milestone in UPSC preparation is qualifying prelims. Until unless you are confident enough that whatsoever the situation is, you will be managed to qualify prelims, you cannot think of mains. So if you are right now, let's say you are new aspirant just entered into UPSC preparation, you must not lose the sight of prelims. Prelims is the gateway, and prelims make your foundation for future journeys. So until unless you are pretty confident, for example, myself, I wrote 6 to 7 UPSC examination, and in each of them, I appeared for interview. So, and after 2 3 attempts, I never studied very much for prelims. Why? Because in first or second attempt, I studied so hard, I prepared very well for prelims that thereafter I didn't feel any obstacle in qualifying prelims. You should also gain such a confidence that whatever comes in the prelims, you will be able to qualify it without any doubt. So you can, whenever you finish your prelims, you just come to home and start preparing for mains. This kind of confidence must be in your hand. And there's another question that, sir, how to start answer writing? Okay, Hindi, fine. So I will use a bilingual language, the Hindi plus English, because it's very difficult to answer some of them in Hindi. So let's start with the mains answer. मीन्स के आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मीन्स आपको आंसर तभी लिखना चाहिए दैट you are pretty confident that you can qualify prelims. Until unless you are not confident enough in prelims, don't focus on mains. Because होता क्या है कि बहुत से बच्चे देखिए I should not say this, but होता क्या है कि बहुत से बच्चे okay, Ayub Sheikh, I will reply to your answer, but let me end this query that start writing कैसे करना है मेंस के लिए तो फर्स्ट आंसर ये है कि देखो जब तक कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने के लिए कॉन्फिडेंट इनफ होता मेंस पे फोकस करिए लेट्स से कि आप प्रीलिम्स के कभी भी क्वालिफाई कर सकते हो एनी डे यू विल बी सच अ यू इस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि आप आज भी मैं आपसे प्रीलिम्स पे कहूँ तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट अब सेकंड थिंग ये है कि जब आप मेंस प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया है आपको मेंस तैयारी करनी है या अदरवाइज तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप टॉपिक उठाइए लेट्स टेक द सोसाइटी सोसाइटी को आप थीम बेस्ड क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड करिए फॉर एग्जांपल देखिए आप हमसे देखेंगे पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है या पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है आप एक बार पास्ट या क्वेश्चन देखिए उनके किसी भी बुकलेट से उसके आंसर रीड आंसर करिए या मॉडल आंसर किसी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनको थोड़ा पढ़िए उसके बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसको आप पिकअप करके उसके आंसर लिख सकते हैं नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट हाँ आईएफएस में हाँ मैं भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ आई एम पोस्टेड एज अ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ इन झारखंड Dungeon Masters are there 2 months enough for means after prelims if I focus on prelims right now. Again, 2 months is enough provided कि आप प्रीलिम्स से पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेते हो बस ऑप्शनल जो होता है वो सबसे टाइम लेता है तो अगर आप प्रीलिम्स से पहले आप प्रीलिम तैयारी कर चुके हो और ऑप्शनल भी अपने डिसेंट तरीके से स्टडी कर लिया है देन 2 मंथ इज एनफ स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें सर स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि
आप एक प्लानिंग कीजिए कि आप इस हफ्ते में कितना कंटेंट आप कवर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉप लिया कि आप इस हफ्ते में एंशियंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, लेट्स से 1 वीक और 2 वीक। डिवाइड इनटू सब पार्ट, डोंट गो माइक्रो, लाइक डिवाइड इन 2-3 पार्ट। 4-5 दिनों में ये कर लूंगा, 4-5 दिन में ये कर लूंगा, 4-5 दिन में ये कर लूंगा। हो सकता है कि आप 4-5 दिनों में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कंप्लीट ना कर पाए, तो आप नेक्स्ट जो आपने टाइम पीरियड बैठा उसको थोड़ा सा यहाँ हो जाए। बट द ओवरऑल थिंग इज शुड बी दैट 2-3 वीक्स आपने डिवोट किए हैं, उसमें एंशियंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो जानी चाहिए, नो मैटर व्हाट। इफ यू फॉलो दिस, योर कंसिस्टेंसी विल बी मेंटेन्ड। आपने कौन सी मिस्टेक करी थी सर? मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने ऐसे की राइटिंग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। सो वन शुड फोकस ऑन ऐसे राइटिंग। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू इज मोर ऑफ ये कॉमन सेंस थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि आप कितना भी जीएस पढ़ के जाएं, हिस्ट्री फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ के जाएं, यू विल डू बेटर। द थिंग इज कि आप जीएस आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए, दैट इज ओके। बिकॉज दे माइट आस्क यू सम फैक्चुअल क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू सम करंट अफेयर क्वेश्चंस, but most of the time they will check your common sense. For example, there were one of the questions in my last year interview was that Alok, you may be given power to choose that you will be born as a man or woman in the next birth. What will you choose? Like कि आपको अगले जन्म में अगर किस तरह पैदा होंगे, आपकी शक्ति है, आपकी चॉइस है, आप नारी बनना चाहेंगे या पुरुष? So that kind of common question you might face. So you will be very thorough in your thinking, straightforward in thinking. एंड मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? आई वुड से कि मॉक इंटरव्यूज depend upon the coaching, because what I feel that there are a lot of coachings, they will give you very good feeling that you are very good. There are some coachings that will grill you, they will आपको लगेगा कि क्या इंटरव्यू खराब चला गया मेरा। There are some coaching which will focus on factual content. There's some coaching that will focus on your overall personality. So you can't say that one coaching is equal to UPSC interview, but I would say that different mock interview cover different part of your interview preparation. So in combined, UPSC interview is a combination of all mock interviews. Um, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए सर? इट रविंद्र तोमरे, इट इज अबाउट प्रीलिम्स और इट इज अबाउट मेंस। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मुश्किल होता है, यस डेफिनेटली मुश्किल होता है। कितने अटेम्प्ट लगा सर आपको? आ, मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था सिविल सर्विस में। आ, मैंने फॉरेस्ट फिल भी नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे फॉरेस्ट मिला, सिविल नहीं हुआ, बट आई रोट वो टाइम। मैंने दोनों टाइम मेंस लिखा था, इंटरव्यू में नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मुझे आईआरएस मिला, उसके बाद फिर मुझे आईपीएस मिला। आई थिंक these are the questions. If anyone wants ask more other question, please go ahead. रविंद्र आयोग, डंजन मास्टर और एनी अदर वन? 2025 के लिए क्या करें? आयोग could you be more precise, because 25 के लिए क्या करें मतलब what do you want to really ask? ग्रेजुएशन के साथ कितना टाइम दो प्रिपरेशन को? ग्रेजुएशन के साथ थोड़ा इजी होता है। अगेन जब वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ग्रेजुएशन के साथ में आप इजी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेजुएशन के बाद आपको प्लेसमेंट में बैठना है। इफ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी, don't consider it, because you are going for civil services, so just go give your 100%। ग्रेजुएशन के साथ कितना टाइम प्रिपरेशन करना है? अगेन वही सेम आंसर है कि आपको ग्रेजुएशन में अपना सिलेबस करना है, बट इवनिंग में आप कोचिंग कर सकते हो, लेट नाइट तक अपने सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, देन अगेन क्लास कर सकते हो अगले दिन जो कॉलेज है, और उसके साथ आप अच्छा पढ़ सकते हो, बट इट इज मच इजियर टू प्रिपेयर इन कॉलेज एज कम्पेयर टू वर्किंग प्रोफेशनल। एलन गेट इट मस्ट करेक्ट। एलन, you are in second year. Very good. You are starting very pretty early. So just prepare for your GS and think about your option.
You have plenty of time, so just choose your optional and prepare it in advance. I would say again, if you want to get your confidence, then again the only one thing you can do. Let's say आपने सप्ते में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, एज इन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो आपने जिस सप्ते में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, until unless at the end of the week, let's say on Sunday, आप किसी भी टेस्ट सीरीज की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज उठा लीजिए और उसको सॉल्व करिए. If you are getting good marks, you will get confidence. If you're not, again go back, revise your notes, study again, give another test. Unless you get good marks in any test, in any coaching test, you will not get confidence. Getting marks, getting ranks in the mock interview, mock test gives you confidence. Okay, Sivang. Okay, Helen, your name is Sivang. Okay, fine. Any other question? Again, everyone, if you have no more questions, then um, whatever, we can close the session. But I really want to answer your queries and whatever the doubt you are having. So, uh, time is running. So, please go ahead and ask your questions. I hope say, come on, मुंबई में रहकर स्टडी कर सकते हैं. Definitely, you can do. You can prepare for UPSC even living in Andaman Nicobar's, but it's up to you. आयोग कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली या मुंबई में कहीं लोकेशन इज़ आज के इस आईटी के ज़माने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी प्लेस इन द होल वर्ल्ड. एनवायरनमेंट बहुत डिफिकल्ट. सो आयोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ चेक कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आलोक वर्मा अंडरस्कोर IPS. आई विल राइट इट डाउन आल्सो. एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले ये है कि एनसीईआरटी क्लास 12th में इकोलॉजी का चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए. उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठा लीजिए. देखिए, मैंने शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट किताब की उसको फॉलो किया था, बट it is 2, 3, 4 years ago. So you can go for another environment book also, but Shankar IS is pretty good, and there are updated version also. So you can choose that also. No issue. And there are if you have any doubt while reading the book, you can Google it. You can go for any YouTube video, short video. You can understand them very well. Yeah, I am also on Telegram. I will share the link later on. But Telegram पे again मैंने कोई channel create नहीं की है, my personal, so I cannot share the number here, but you can connect me on Instagram.
I think if no one has any query right now, so they have to go for some another work. So let's end it now. And thank you everyone for joining here, asking queries. I wish you good luck, and I hope you work hard with discipline and consistency, and you may triumph in your coming battle with flying color. Good luck and good speed, everyone.